Good afternoon, students. How are you? I hope that all students are well at their home. Okay. And if we discuss about our studies, I think chapter 2 is going on in physics. And in chapter number 2, we have covered the topic till combinations of errors. Clear? And in combination of errors, I have told you four possible combinations. Number one for addition, number two for subtraction, multiplication, and division. And we have also discussed that in addition and subtraction the rules are same, and in multiplication and division the rules are same for combination of errors. And then after we have also discussed the errors uh, in case of measured quantity raised to a power. Clear? And we have solved some solved examples also of NCERT textbook. I have also discussed some rules regarding the significant figures, and this is the topic, you know, students, that this is the common between physics and chemistry both. Important topic because in competitive examination sometime asked in the exams that if a number is given to you, then you have to count how many significant figures are there in a particular number. So we should must aware about the rules for finding the significant figures. And we have discussed also some rules, obviously. But first of all, I want to discuss it again, that you know that significant digits or significant figures are what? All the non-zero digits in a number. You can say all non-zero digits in a number are always significant. Are always significant. And if you see its definition, you can see here the reliable digits plus the first uncertain digits are known as the significant digits or significant figures. Clear? Suppose if you have a time period of a simple pendulum is 1.62 seconds. In this number there are three digits: 1, 6 and 2. 1, 6 and 2. These are three digits. बच्चों आपको पता है जितना हम डेसिमल पॉइंट्स के पीछे जाते जाते हैं, जैसे डेसिमल के बाद दो पॉइंट्स हैं, दो डिजिट्स हैं यहाँ पर, और डिजिट्स जितना आगे जाएंगे अनसर्टेनिटी लास्ट वाले डिजिट की उतनी ज़्यादा होगी. Here I can say 2 is the digit of uncertain. Thus the measured value has three significant figures. Suppose if a measurement has 287.5 centimeter, it has four significant figures: 2, 8, 7 and 5. Clear? So here are the certain rules for finding the significant figures, and I think you all are aware with these rules, but we should just have a little revision about these rules also. The first rule is all the known zero digits are always significant. This is the first rule. All the known zero digits are always significant. Number two, all the zeros between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is, if at all. Suppose if you are having a number 1002, here there are two zeros between two non-zero digits, they are always significant. Let's see the rule number 3. If the number is less than 1, my dear students, please listen it carefully. If the number is less than 1, you can see in the example also 0.002308. This is the number less than 1. Then the zeros on the right of the decimal point, इन दो जीरो की बच्चों में बात कर रहा हूँ. Then the zeros right of the decimal point and left to the first non-zero digits, जैसा कि यहाँ पर 2 है, are not significant.
these two zeros are not significant digits in this number. So only 2, 3 and this 0 and 8. There are 4 significant figures digits in this number. Okay, am I clear? I'm again repeating the third one. If the number is less than 1, the zeros to the right side of the decimal point and the left side of the first non-zero digits are not significant digits. Clear? Now the next one is the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. You can see in this measurement, suppose if the length is 123 meter, 123 meter, obviously you can write it also 12300 centimeter, and in millimeter you can write it as 123,000 millimeter. But all these three numbers, the significant figures are 3. How many significant figures are there? Only 3 significant digits of figures are there. If you write 12300, then trailing zeros are not significant digits. The trailing zeros are not significant digits. Yes or no? Trailing zeros are not significant digits. Let's see the next one. The trailing zeros in a number with a decimal point are significant. यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बिल्कुल केयरफुल होना पड़ेगा. If trailing zeros are without decimal point, they are not significant digits. But if trailing zeros in a number with the decimal point, they are significant. They are significant figures. What I want to say, if a number is 3.500, it has 4 significant digits. Because this number has a decimal, so in this situation the trailing zeros should be counted as the significant digits. Now let's see this one, 0.06900. You can say that the number is less than 1. So in this case this 0, ये वाला जो 0 है बच्चों, just after the decimal point and before 6, it will not counted as the significant. But these two zeros are the trailing zeros with the decimal point, so this number has again 4 significant figures. बच्चों लेकिन इसमें जैसा कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कब ट्रेलिंग जीरोस को लेना है नहीं लेना. वैसे कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है. I have told you, if the number is if in a given number trailing zeros are without the decimal point, you will not counted them as the significant digits. But if it is with decimal point, you should count them as the significant digits. बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आती हैं, दे शोज व्हाट, दे शोज you can say precision. They shows precision, how precise you measure the physical quantity. सपोज आपने कोई मेजरमेंट किया और आपका आंसर है 3.5, and in the second observation you measured 3.502. So you can say in the second case you are more precise. आपने डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कैलकुलेशन किया है, so number is more precise. But remember, if you are changing the system of units, the number of significant digits will not change. Number of significant figures will not change. Clear? तो बच्चों इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है कि हम कोई भी नंबर है, to remove such difficulties in determining the number of significant figures, the best way is to report every major quantity in the scientific notation. Scientific notation का मतलब है बच्चों in the power of 10. Scientific notation का मतलब क्या है? In the power of 10.
What I want to say, you can just write a given number in this format: a into 10 raised to the power b. And which format you have to write? A into 10 raised to the power b. Where what is a? A is the number between 1 and 10. What is a? A is the number between 1 and 10. And b is any positive power or negative power, or that you can say as exponent. What I want to say, आपको यदि कभी ट्रेलिंग जीरोस को लेकर कंफ्यूजन हो, then you should write the given number in the scientific notation. Scientific notation क्या है बच्चों? Scientific notation है, you should write the given number in the case a into 10 raised to the power b, where a is number between 1 to 10 and b is any positive or negative power of 10. As you can say that what a is, a I have told you a is a number between 1 to 10, and what's about b? You can see b is the power or exponent of 10, and this represents the order of magnitude of the physical quantity. Order of magnitude. What I want to say, आपने कहा कि डायमीटर है अर्थ का 1.28 into 10 raised to the power 7 meter. It is of the order of 10 raised to the power 7. 1.28 is the number, and 7 is what? 7 represents the order of magnitude. What the 7 represent? 7 represents the order of magnitude. So in this way, students, you can write 4.700. You can write it as 4.700 into 10 raised to the power 2. आप 10 raised to the power में यदि convert कर देंगे, then there will be no problem in the uh, determination of the significant digits. I hope I'm very clear about the significant digits. So this is whole about the significant digits. Now let's see the rules for arithmetic operations with significant figures. You know that arithmetic operations are mainly, there are four: addition, subtraction, multiplication and division. So let's see what is the rule for addition and subtraction, number for multiplication and division. हम पहले बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, जैसे सपोज मैंने आपको कहा मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस, यू कैन सी इन द एग्जांपल दैट मास इज 4.237 grams, and I have given density also 2.51 centimeter cube, and my question is find the density. So my dear student, you know that there is a simple relation: density is equals to mass upon volume. आप मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे, आपको डेंसिटी का आंसर मिलेगा। लेकिन हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर मास में आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट से मास की वैल्यू में 1 2 3 4। There are 4 significant digits in the value of mass, and there are only 3 significant digits in the value of volume. तो लीस्ट कितना है? मास में तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो रूल सेज दैट इन डेंसिटी minimum 3 significant digits should be there. So what is the rule I want to convey to all of you? And multiplication or division, the final result, जैसा कि इस केस में डेंसिटी है, the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures. आपको जो मास और वॉल्यूम गिवन है, उन दोनों में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, डेंसिटी में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना कंपलसरी है. दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Now what's about for addition and subtraction? Let's see. Addition में बच्चों जैसे सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 436.32 ग्राम,
This is my first number. The second is 227.2 gram, and the third is 0.301 gram by mere arithmetic addition. आपको इन तीनों को ऐड करना है. You can add them, and you know that answer is 663.821 grams. 663.821 grams. बच्चों मैं आपसे यदि ये पूछना चाहूँ कि जिन तीन नंबर्स को आपको ऐड करना है, जैसे फर्स्ट नंबर आप देखें, इसमें डेसिमल के बाद कितना है डिजिट्स? 2. इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1. इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स, 3, 0 एंड 1. बच्चों ये जो लास्ट डिजिट है, दिस इज मोस्ट प्रिसाइज. हमारा जो आंसर होगा वो उसमें कम से कम उतनी ही प्रिसीजन हमें रखनी है जितनी मैक्सिमम आपको इसके अंदर दिख रही है, या जितने प्लेसेस तक हमने इसमें ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया है. जैसे यू कैन सी द रूल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. Clear? तो आपको इन तीनों को सम करना है 436.32, और आपने देखा कि इनका आंसर आ रहा है 663.821 ग्राम. बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट is you can say 227.2. Why this is the least precise? Because only in this number there is only one digit after the decimal point. Is correct to only one decimal place, इसलिए आप फाइनल रिजल्ट को कितना लिखोगे बेटा? 663.8 ग्राम. 663.8 gram. The same rule is hold for subtraction also. तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है ये रूल की बात समझ में आई होगी. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आपको जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल रिजल्ट में उतने रखने हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको जितना लीस्ट प्रिसाइज के अंदर जितना है वैल्यू उतनी फाइनल रिजल्ट के अंदर उसको मेंशन करना है. तो दिस इज अबाउट द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. नाउ हाउ यू कैन राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स. राउंडिंग ऑफ बड़ा आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों. आप सभी इसको करते भी आए हैं, छोटी क्लासों में भी किया है आपने. जैसे ये देखते हैं आप 2.746. सपोज आई वांट टू राउंड ऑफ अ नंबर दिस डिजिट 6. मैं 6 को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो आपको सीधे सीधे पता है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5. 5 से ज़्यादा है तो इससे जो प्रिसाइडिंग डिजिट है वी विल रेज इट बाय 1, एंड आफ्टर राउंड ऑफ द डिजिट विल बी 2.75. And in this case 2.743, if the round off digit is 3, this is less than 5, so the preceding digit will remain unchanged. So my dear student, question arises if the digit whose you want to drop, जिसको आप drop करना चाहते हैं, यदि वो digit 5 से कम है तो हमें preceding digit को नहीं बढ़ाना. यदि drop जो digit है वो 5 से ज़्यादा है तो preceding digit 1 से बढ़ाना है. लेकिन समस्या होगी यदि वो डिजिट 5 खुद हो, 5 के इक्वल हो, तो क्या करना होगा? लेट्स सी. सो हियर इज द रूल दैट प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 1 and is left unchanged if it is less than 5. बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब यदि 5 से ज़्यादा है तो आपको प्रिसाइडिंग डिजिट को 1 से रेस करना है, 5 से कम है तो प्रिसाइडिंग डिजिट को अनचेंज रखना है. एंड लेट्स सी, यदि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना हो वो 5 हो तो हमें क्या करना है?
Let's take an example 2.745. In this number, suppose if you want to just drop this digit 5, तो हम क्या क्या देखना होगा बच्चों, उससे पहले 5 के जस्ट पहले आप देखिए, if there is a odd number then it should be raised, and if it is even number, then there will be no change. You can see here, if the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, and if it is odd, then the preceding digit is raised by 1. मतलब यदि हमें 2.745 को राउंड ऑफ करना है बच्चों, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 2.74 होगा, क्योंकि 5 के पहले क्या है, यहाँ पर 4 है, और 4 एक इवन नंबर है, दैट इज इट इज 2.74. बट सपोज इफ यू आर हैविंग ए नंबर 2.735, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 के पहले डिजिट 3 है, तो यहाँ पर हमें 1 से इसको बढ़ाना होगा, एंड इट्स राउंड ऑफ विल बी 2.74. So my dear students, this is whole about the rounding of digits also, and you also solve example 2.13, simple formula based surface area of cube. I think you all know 6 into side is square and volume of the cube is side cube. और आप ये जितने मैंने rules बताए हैं इससे इसको solve कीजिए, and from tomorrow I think we should start the most important topic of the chapter, and that will be the dimensions of physical quantity. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ये समझ में आया होगा, तो आप पूरे कंटेंट का रिवीजन करें, ठीक है, और अपने नोट्स में इस टॉपिक तक मेंशन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.